Okay, good morning, students. Can you hear me? Yes, good one. Okay. My voice is clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Let me share my screen. I hope my screen is visible, right? Can anyone confirm, please? Yes, sir. Okay, thank you. Okay. So yesterday we have seen about three things, right? Class, method, and object. Okay. Now, what is method? What is method? Or what is the use of method? To perform any action. Okay, good. To perform any action. Okay, that you want to perform in your actual state. Okay. Now, methods are of two types generally. Yesterday I told you one is user defined and second is uh, language defined, like defined by the language itself. You can use that method directly from the Java library or Java method. Okay. Yeah, can you hear me now? Is that voice clear now or still you are facing issue? Clear, sir. So we have two types of methods. Okay, one is user defined, means as a user we are going to define that method. Okay, as a user we are going to define that method. And second is language defined, means some methods like println. Okay, that method was already defined by the language and we are just using it as it is. Okay. Hello. सर Yeah, tell me. सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है. Wait. Is that clear now? Yes, sir. Everybody? Yes, sir. Yes, Okay, sir. fine. So we have two types of method. Okay, one is user defined and second is language defined. User defined means whatever the action we are defining in our created class. For example, if we are defining like m1, m2 or any name which we are giving, that comes under user defined. मतलब as a user हम उसको define कर रहे हैं. Okay. And second is language defined, means some methods like println. This is also one type of method. Okay, but this is already defined in Java. Okay, when Java was developed, that time the group of people have developed that method. Okay, that is println. So we are directly using that method. Okay, now again in these two methods we are having two types. Okay, we are having two types as static and second is what, non-static. Okay, I will tell you the difference also, no issue. Similarly, for language defined also there are some static and non-static method. Okay, non-static method.
So what is the difference between static and non-static? For example, for static method, okay, for static method, we we are not interested to define any object, okay. So there is no need of object. Why we are using the object? Yesterday we have seen, right, what is the use of object? To access method we created object. Right. Very good. Now here, if I am saying the method is static, okay, the method is static, whatever it may be user defined, it may be language defined, because both have same types, static and non-static. So for static, I am saying there is a no need of object. Okay, that means your question will be, then how we are going to use that method? If we are not going to use any object, then how we can call that object, okay, that method, okay, that we will see today. Okay, next, the non-static method. How we are calling the non-static method? Yesterday we have seen, right, if we want to call any non-static method, that may be user defined, right? Yesterday we have created m1 m2. So how we have called them? Using object. Yeah, simply by using object. That means we need to create object of that class to access any non-static method. Okay, similarly with the language defined, if it is language defined, then there is no need of object. Again the question remains same, how to call that method then if we are not creating the object? And for non-static, definitely we require object to call that method using object. So these are the two types of method, okay, which we are going to see. Now I will show you both, okay. At least today, as of now, we can see the two methods, okay. That is what the user defined static and user defined non-static, okay. I will show you that. Okay, now now these are two types of method, okay. In program I will show you both this user defined static and user defined non-static method. Okay, this is okay. Now just we'll start with some new session with new concept, that is data variable. Okay, data variables. What is data exactly according to you? What is data? Data is just some piece of information in systematic way. Very good. Again, anything? Okay. Okay. Can you see my screen? Are you able to see my screen? Yes, sir. Okay. Now see, in Java we have two types of data, okay. In Java we have two types of data. One is the primitive. First one is the primitive data type, and second is non-primitive. Called as a reference data type. Okay. Now the basic understanding for both is, for primitive data type the memory is fixed. देखिए हम कुछ डेटा स्टोर कर रहे हैं, राइट, इन जावा while writing the code. So definitely that data may consume some memory, right? हमको नहीं पता होता है कि वो memory कितनी है, क्या है, but definitely in the background it is using some memory. Okay, if we are writing any code using any data. So if the data is consuming a specific amount of memory, means it is fixed. Specific means I can definitely tell if it is
like integer, then how I much can memory definitely it is tell consuming. if it I is can tell you. like Okay, integer, in then that how way much memory it is consuming. I can it tell is you. called as Okay, a in that primitive. way it is Okay, called as a second is primitive. non-primitive data Okay, type. and second is non-primitive We data cannot type. specify Means how much we memory cannot is specify consumed how by much this memory data is type. consumed Okay, by this data so type. that's Okay, so comes under the comes under the non-primitive data type. non-primitive data type. Now, Now, what are the what are the primitive data primitive type? data type? Okay, What are the what are the primitive data primitive type? data type? First is First the is the byte. byte. First is the First byte. it's the byte. Okay. Okay, Now this now byte this is a byte is keyword a in Java. keyword in Java. This byte This is what? byte is what? The The keyword in Java. keyword in Java. It is It is accepting the accepting the value value from from minus minus 128 to 128 to plus plus 127. 127. In this In range, this if we are range, if we are putting any putting value any in this value in range, this range, we can we can specify it as specify a it as a byte. byte. Okay. Okay, We can we can specify it as specify a it as byte. a byte. Again, Again, this this byte byte is is a a keyword keyword in in Java. Java. If If you you type type byte, byte, it will be will be highlighted in the highlighted red in the color. red color. Okay. Okay, Now, now how much how much memory is memory is allocated to the allocated to the byte? That byte? is That is simple one simple byte. 1 byte. Okay. Okay, If if you you are are storing storing any any value value between between 128 128 minus 2 minus 2 plus plus 127, 127, it is it is giving you giving you 1 byte 1 memory, byte or memory, it is or it is consuming 1 consuming byte 1 byte memory. memory. Okay. Okay, For for example, example, for for example, example, I will I will create a create a new new class. Okay. class. Okay, In this in this project, project, we have we have created one created one package. package, For for example, example, demo, demo, and in and that in demo, that demo, I'm just I'm right just click right click on it. on it. Okay. Okay, Just just create a new create a new class. class. Right. Right, Create a create new a new Java class. Java You can class. You see can the see the highlighted highlighted portion. Okay. portion. Okay, If you if click you it, click it, it will it ask will you to ask give you a to name give a to the name to class. the class. Class name Class name always always start start with with the the upper upper letter. letter. So I'm I'm saying saying it it as as a data data variable. variable. Simple. Simple. DTPR, DTPR, short form short of form data like variable. data variable. You can You give can give any name. any name. Okay, Just make just sure make you are sure you are using the using the first letter first as a letter as a capital for capital the for any the class any name. class name. Okay. Okay, No need to no change need to change anything in anything this. in this. Just click Just on click on finish. finish. The The class class will be will be created with the created with the given name, given that name, is that is DTVAR. DTVAR. That's what That's I what gave the I name. gave the name. Okay. Okay, Now now in this in this class, class, see, see, I'm going I'm to going to define like define one like one variable. Okay. variable. Okay, Like how to like how define to a define a variable. variable. We have to We have give to the give data the type. data I will type. show I you will show you how to how define a to define a variable. variable. First, we have to specify the Type. data type. Okay. Okay, Then we have to then we have to specify specify any name any name that is called as a that is called variable. as a variable. That is called as a That is variable. called as a variable. And And equal to symbol, equal to then we have to symbol, then we assign have some to value. assign some हमको उसको value. कुछ value हमको देना उसको कुछ पड़ेगा. value देना पड़ेगा. Okay, Simply I am saying simply I am it's saying value. it's value. Okay. Or Okay, or just value. Okay. just value. Okay, And then you and have to then you have to terminate the terminate sentence. the So sentence. this is the So what this is the the what syntax the to define syntax any to data. define any For data. example, I am saying byte b. Now you can see the byte is highlighted in red color, right? In maroon color, for example, because it is a one of keyword in Java. So byte b is equal to, I told you it is accepting value between minus 128 to plus 127. Okay. So for example, I will try any value which is not in the range, minus. Okay. See, it will not accept that value, though there is nothing wrong in the syntax. Okay. So why? Because this value we cannot convert into the byte because of this size of the What value. into the Okay. byte because For of example, this I will size give of you the what is value. the Okay, value within the range. Okay. Give me a minute. is it my screen visible now? Okay. Okay, okay. So So I have told told you you the the syntax syntax here. here. Okay. Okay, In in line line number number 5, five, which which is is commented. commented. First First, we we have have to to tell tell the the data data type. type. Then Then any any variable variable name you want. Okay, any any variable variable which you which want you to want to define, define, we we can can define define as as a a name, name, that is that is variable name, variable name, is equal is to equal to values. values. Now we Now have we have seen seen this this byte. byte.
Okay, this this byte byte is is defined defined by by the the 1 1 byte byte memory memory, and and it it consumes consumes value value between between minus minus 128 128 to to plus plus 127. 127. Okay, Okay, this is the this is value the it can value it can store, store, not not beyond this beyond limit. this limit. So we are So just we are trying just for trying this. for this. For For example, example, here I here want to I make want it to as a make it as a minus 8. minus 8. See, See, so so it is accepting accepting the the value. value. I'm I'm not not getting getting any any error error because because it is it is within the within the range. range. If If I I will will make make it it 88, 88, still it still is it is okay. okay. If If I I will will make make it it minus minus 1 1 triple triple eight, eight, it it is is beyond beyond the the limit. limit. So it So is it is not not accepted. accepted. Okay. Why? Okay, Because why? if we are Because if we specifying are the data type as specifying a data byte, type as a byte, then its then its variable can variable can accept the accept values the within the values range. within the range only. Okay, and that Okay, range and for that byte range is for what? byte is what? Minus Minus 128 128 to 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 plus plus 127. 127. Okay, Okay, this is this the is the range of that range of that variable variable if we are if we are specifying it as a specifying it byte. as a byte. Okay, Okay, so there are so there many are data many types data like types this like in this the in the Java. Java. First one is First like one is I'm like saying I'm byte. saying byte. अब आप जब अब आप actual जब practice actual करोगे practice तो करोगे तो we don't need to we don't we need don't to need to what we can what say we can say remember this remember range this range generally. generally. Okay, Why? why? Because Because I will see, tell you. See, byte byte is from is from 128 to 128 to 127. 127. It is It not is not always always possible that possible that you are you going are to going to use use value value between this between range this only. range only, right? ऐसा नहीं कि ऐसा आप नहीं कि आप minus माइनस 128 से $128 plus से प्लस 127 तक की 127 कोई तक ही value कोई use वैल्यू यूज करोगे. करोगे. You can यू use कैन यूज beyond it बियॉन्ड also. इट ऑल्सो. So So we we can can use use next next data type data also. type also. Okay. For Okay, for example, example, it it is is a a short. short. Okay. Okay, The next the data next type data is type is maybe maybe short. short. Now Now this this time time you you can can see see the the range is range is increased. increased. Okay. Okay, This range this is range is increased increased from from minus minus 32,768 32,768 to to plus plus 32,767. 32,767. Now this Now time this it is time it is consuming 2 consuming byte. 2 byte. This time it This is time it is consuming 2 consuming byte. 2 byte. Okay. Okay, Now see, now see, if we are if we are defining defining any any value value as as a a short type short type s, as any any variable name, variable name, if you are if you are using using value as value as 127, 127, it will it also will also accept as a accept as short, a right? short, right? Because it is Because it is falling falling between this between range. this range. Okay. Okay, So so similarly, similarly, we we have have third third type type as as an integer. integer. Okay. Okay, We have we third have type as third type as integer integer and and keyword keyword used as used as I I and t. and t. Just Just integer का integer का जो initial three initial word three word है है, that is that is I int and that t we are that we are using. using. So again So you can again you see can the see range the is range is increased. increased. Okay. Okay, Now now we we don't don't need need to to remember remember this this range. range. Okay. Okay, अब अब actual में एक्चुअल जब में आप जब आप practice प्रैक्टिस करोगे करोगे तो तो ये ये जो जो numbers नंबर्स है है ये ये डेफिनेटली definitely ये कुछ कुछ range के रेंज अंदर के अंदर होंगे. होंगे. So we So don't we need don't to need to worried worried about about the the ranges ranges and its and its memory type. memory type. बस हमको बस पता हमको होना पता चाहिए होना कि चाहिए कि byte बाइट एक डेटा एक डेटा टाइप है, टाइप है, short भी शॉर्ट है, भी है, int इंट है, again there is अगेन a देयर इज अ long. लॉन्ग. Long is लॉन्ग again इज one अगेन वन keyword. कीवर्ड. Okay. ओके, और और डेटा डेटा टाइप. टाइप. अब अब देखिए देखिए उसकी उसकी रेंज रेंज अगेन अगेन बढ़ बढ़ गई गई है. है, राइट? You can You can find this find range this is range is also also increased now, increased now, and and it it is is consuming consuming 8 8 bytes bytes memory memory as as a a 8 8 bytes. bytes. So So these these all all are are the the value value comes comes under under the the like like type type where we where we can can save the save the integer integer value value or or a number, number, simply simply numbers. numbers. Okay. Okay. Next Next, fifth one fifth will one be is the float. float. Now Now, if your if your value value comes with comes with any any decimal decimal point, point, okay, okay, like like here here 0 0 point, point, like like sometimes, sometimes, or we can say 0 0 point point triple 001 zero or one or 001 double zero something. one something. Okay, Okay, it comes it under comes the under float. the float. But But take care take of care this of one this data one type. data type. If we are If we are defining defining the the data data type as type a as a float, float, compulsorily we compulsorily have we to have put to put small f small at f the end. at the end. See, See, आपके आपके नंबर के नंबर बाद के बाद जो भी भी डेसिमल डेसिमल नंबर नंबर है है आपका, 0.009, 0.009, 0.0079, 0.0079, whatever whatever it it may may be, be, you have to you have write to f write f after that after number. that number. Then Then only only Java will Java will understand, understand, okay, okay, the the defined data defined type data is type is float float and the and the number is number is also also belong to belong to float. float. Okay. Okay.
Again, if we are not defining float, we can define it as a double also. Double is also one data type. Okay, double is also one data type, but here we don't need to define f. Whatever the value, you can just put as 0.000 something and whatever the number. Difference between them is just of the memory allocated. For float, it's a 4 byte, and for double, it's 8 byte. Okay. Now the remaining like boolean. Okay, this boolean is also one data type which can store only two values,
either true or or false. false. For For example, example, I'll I show will you. show you. If I'm If I am defining defining any any value as a value as a boolean, boolean, okay, okay, and and any any variable you variable want to you put want to like put, n, like n, for for example, example, okay, okay, we can we can save it as save a it as a true, true, okay, okay, or we or can we save can it save as it as false, false, okay, but we okay, but cannot we save cannot as save as a anything like anything other like than other this than this true or true or false. It false. will It give will an give error, an error, okay, okay, though it is though it is syntactically syntactically correct, still correct, it will still it not will not accept. accept. So So if we are if we are defining defining boolean as a boolean as a data type, data type, then then we we can can use use either either true true or और false, false, not not together, okay, together, okay. हम दोनों हम वैल्यू दोनों को वैल्यू साथ को में भी साथ में यूज भी यूज नहीं कर सकते हैं. we can We just can just use use either of either them, of them. either it may Either be it may true be true or either or it may either be it may be false, and false, just and complete just the complete the sentence sentence like that, like that. okay. Okay. So this So data this type data is type called is what boolean. boolean. Next is Next is char, char. any Any character, character, single character. okay, Okay. single Single character like character like you want to you want to specify specify any any initial, initial. so we can So say we can it's say a. it's a. Okay, wait. Char, Char, its its value should value be should given be in given in single quote. single quote. Okay. So Its its value should value be should given be in given in single single quote. quote. Okay. Okay. It is having the duplicate variable name. Okay. So char, any variable name, it should be not duplicated. Here I have written n, so it was already used for this boolean data type. So that's why it is throwing an error. So this value can store just single character. Okay. So all these type, okay, which we have seen, that is 8 types. First one is byte, second short, int, long, float, double, boolean, and char. All these data types are consuming some specific amount of memory. That's why they comes under the primitive data type. इसमें किसी को कोई डाउट है हाउ दे आर प्रिमिटिव? सर एक डाउट है, अगर स्टार्टिंग में जो डेटा टाइप अगर मेंशन नहीं किया, फॉर एग्जांपल शॉर्ट मेंशन नहीं किया और डायरेक्टली एस में मतलब वेरिएबल में वैल्यू पुट कर दी, तो उससे क्या होता है? No, it's a wrong syntax to define data. If you are saying, for example, okay, I will make it correct first to remove error. Okay, he is saying if I will just use variable name and save any data, right? Yes. Now the system will not understand exactly the data type. ओके चलिए, यहाँ पे भी आपको एरर नहीं मिला है, मान लीजिए. अब डेटा हम यूज करते हैं तो उसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कुछ ऑपरेशन हो सकते हैं डेटा पे, राइट? इफ आई वांट टू ऐड एनीथिंग, okay, in later point, for example s plus 2. Now what I'm expected as answer, it should be 125, right? But it will not give you the correct output. Why? Because it will not understand this s belongs to any integer, though we have defined the values. Okay, though I have defined the values, it will not accept. So the standard way to define or give any value to the variable is, first we have to specify the data type, whatever it may be. It may be integer, short, float, double, whatever it may be. Accordingly you can give the values, and variable name, it can be anything, whatever you want you can use it, except any keyword. Okay, you cannot use again the keyword here as a variable name. Clear? Yes sir. Any doubt again? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. Okay, thank you. Now second type is what? The non-primitive. Non-primitive मतलब इसका जो मेमोरी है वो फिक्स नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्ट्रिंग. स्ट्रिंग क्या बोलते हैं हम? दैट इज अ सिंपल कॉम्बिनेशन और कलेक्शन ऑफ as many of character, more than one,
और वन भी हो सकता है. But the rule here, we are going to define the string in double quote. अब देखिए string है, again I'm saying it as a string and we are giving its variable name, any variable name and its value. अब यहाँ पे मैंने a ही दिया है, no issue. Now this can be char also. इसको मैं कैरेक्टर डेटा टाइप में भी सेव कर सकता था, बट अगर मैंने इसको डबल कोट दिया है तो इट बिकम स्ट्रिंग. ओके, अब देखिए नेक्स्ट मैं इसको कुछ बोल रहा हूँ. अगेन आई एम डिफाइनिंग एनी वैल्यू एज अ पर्सन नेम, कॉलेज नेम, स्कूल नेम और एनीथिंग. अब स्कूल नेम, पर्सन नेम, इसका लेंथ में डिसाइड नहीं कर सकता हूँ, राइट. इट मे बी एनीथिंग. दैट्स वाई इसका जो मेमोरी साइज है ये कांस्टेंट नहीं होगा. सो वी कैन नॉट स्पेसिफाई हाउ मेनी मेमोरी इज कंज्यूम्ड बाय दिस स्ट्रिंग डेटा टाइप. सो दिस कम्स अंडर नॉन प्रिमिटिव. अब हम फ्यूचर में देखेंगे कि हम स्ट्रिंग डेटा टाइप फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, राइट, टू स्टोर एनी लाइक यूआरएल और टू स्टोर एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, सेकंड है एग्जांपल आपका क्लास. देखिए क्लास हम जब क्रिएट करते हैं तब हमको पता नहीं है कि एज पर अवर कोड लेंथ हाउ मच मेमोरी इट विल गोइंग टू कंज्यूम, राइट. मान लीजिए मेरा क्लास का जो कोड है उसका लेंथ है 10 लाइन्स और एक क्लास का लेंथ है 50 लाइन्स. So ultimately because of this also we cannot specify how much memory is occupied, right. So that's why class ये भी जो entity है ये भी एक डेटा टाइप है. दिस कम्स अंडर दी नॉन प्रिमिटिव बिकॉज इसका लेंथ हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते. लेंथ मतलब शॉर्ट में मेमोरी. आप क्लास कितने भी लाइन का लिख सकते हो, मतलब कोड जो है क्लास में एनी नंबर ऑफ लाइन यू कैन प्रेफर टू राइट एज अ कोड. अब नंबर ऑफ लाइन अगर आपके फिक्स नहीं है तो आपकी मेमोरी भी वेरी होगी. दैट्स व्हाई इट्स कम्स अंडर द नॉन प्रिमिटिव. नाउ रिमेनिंग टूज आर arrays and interfaces. ये हम देखेंगे कुछ दिनों के बाद. ओके, बिकॉज इट इज अगेन द न्यू कंसेप्ट ऑफ जावा. इसको मैं एक लाइन में आपको इलेबरेट नहीं कर सकता हूँ. ओके, बट डेफिनेटली वी विल कवर. जब मैं एरे पढ़ाऊंगा तो यू शुड बी कंसिडर एज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा. ओके, अगेन इफ आई विल the interfaces it is comes under the non primitive data. So non primitive data especially string और class में किसी को कोई डाउट है? at least string और class. arrays और interface तो मैं पढ़ाऊंगा बाद में. ओके, इसमें किसी को डाउट है? नो सर. बट मेक श्योर स्ट्रिंग को आप डबल कोट में लिख रहे हो. अगर आपने सिंगल कैरेक्टर भी लिखा है ओके स्टिल इट इज एक्सेप्टेबल. आप कहोगे कि सर ये तो वैर था. सॉरी, नॉट वैर, इट्स अ कैर. See char c is equal to h in single quote. अगेन आप सेम जैसे h वैल्यू या कोई भी सिंगल अल्फाबेट भी सेव कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग ऑल्सो. बट आपको डेटा टाइप डिफाइन करना होगा स्ट्रिंग, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, और उसकी वैल्यू जो है आपको डबल कोट में देनी. वी हैव टू स्पेसिफाई द वैल्यू इन डबल कोट. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No doubt. No doubt, sir. No, sir. Now we have seen the data variables, है ना? Generally two types. One is what your primitive data type, and non-primitive. Simply on the basis of memory allocated we can classify into two types. Primitive data type के लिए memory आपकी fix होगी. It may be 1 byte, 2 byte, anything जो byte specification है वो होगा. And for the non-primitive we cannot specify or we cannot say the constant memory is consumed. Okay. Now अभी जो वेरिएबल्स है, ओके, डेफिनेटली आई एम सेइंग इट एज अ वेरिएबल. आई एम क्या कर रहा हूँ, मैं डेटा को किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ. आई एम स्टोरिंग द डेटा इन वेरिएबल. वेरिएबल का काम है कि वो कुछ नाम से आपका डेटा सेव करेगा और कुछ वैल्यू होल्ड करेगा. नॉट वैल्यू फ्रॉम मेमोरी बट वैल्यू मतलब आप जो भी इसको स्पेसिफाई करते हो. b इज इक्वल टू 10, p इज इक्वल टू 22. तो ये जो वैल्यू है वो स्टोर करता है. फॉर एग्जाम्पल
like int a a is is equal to equal to 10 10 or or anything you anything want. you want. यहाँ पे यहाँ पे एग्जैक्टली क्या एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हो रहा है, हम हम 10 10 वैल्यू वैल्यू a को a को असाइन कर असाइन रहे कर रहे हैं कि हैं, a के a लिए के 10 लिए असाइन 10 कर असाइन कर रहे हैं. एक ही लेट We, है. रहे हैं. very good. We are assigning 10 value to the a variable. हम 10 के लिए a वैल्यू a नहीं कर रहे. तो इन फ्यूचर अगर मान लीजिए मैं 10 नंबर मान रहा हूँ किसी कहाँ पे, इट विज नॉट ऑलवेज शो a. फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है, सो एट दैट टाइम यू कैन नॉट से आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाई a, राइट. हाँ, अगर मैं a यूज कर रहा हूँ कहीं पे भी फ्यूचर में तो a की वैल्यू 10 होगी बिकॉज मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया है. सो 10 वैल्यू इज असाइन टू a. नाउ इन फ्यूचर में जब भी a ये वेरिएबल यूज करूंगा कहीं पे भी मेरे कोड में, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली जावा क्या कर लेगा, 10 कंसिडर कर लेगा बिकॉज वी हैव गिवन द इंस्ट्रक्शन की जावा प्लीज कंसिडर a is equal to 10 means the value of 10 is assigned to a variable. बट इन फ्यूचर अगर मैं किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ दैट डजंट मीन वी आर मल्टीप्लाइंग बाय a. ओके, until and unless we are going to specify it like क्रॉस सिंबल a, तो मानूंगा कि मैं a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट पुटिंग मल्टीप्लीकेशन 10, तो वो पॉसिबल नहीं कि मैं हमेशा उसको a ही बोल रहा हूँ. ओके, दैट इज अ वन थिंग. नाउ द डेटा टाइप or this variable are of three types. One is local variable. Okay, one is local. Next is instance, and one last one is we can say static or class variable. Okay, static or class variable. स्टैटिक और क्लास वेरिएबल. अब ये देखिए ये वेरिएबल के टाइप कैसे है वो हम देखेंगे. फर्स्ट, लोकल वेरिएबल का मीनिंग होता है कि इट इज डिफाइंड इन मेथड एंड इट कैन बी एक्सेस्ड विद इन सेम मेथड. आपको मेथड तो पता है, अगर किसी मेथड में मैं कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, ओके, और उसको मैं वहीं पे यूज कर रहा हूँ, ओके, देन इट्स कम्स अंडर दी लोकल वेरिएबल. ओके, नाउ हम इसको एग्जांपल में भी देखेंगे इन टर्म्स ऑफ कोड. नाउ व्हाट इज इंस्टेंस वेरिएबल, एनीवन नोज? व्हाट इज इंस्टेंस वेरिएबल? Access outside the matrices, outside the outside the method. yeah, see it is defined outside method and but can be used in any method. yeah, it can be used in any method because we are defining it outside the method, but it is within class. है ना, हम एक क्लास की बात कर रहे हैं अभी, बट विद इन क्लास ओनली. अगर मैं इसको डिफाइन भी करता हूँ किसी भी मेथड के बाहर में, आउटसाइड एनी मेथड, बट इट कैन बी एक्सेस्ड विद इन क्लास ओनली. ओके, और क्लास में डिफाइन करना है इसको सिंपल. वो भी मेथड के बाहर हो सकता है बट क्लास के अंदर होना चाहिए. मीन्स विद इन क्लास बॉडी. सिंपली विद इन क्लास बोल रहा हो तो आपको क्लास की बॉडी पता है. ओके, दरवाजा बंद कर रहे हैं. okay, and simply for static or class variable we have to use a keyword. We have to we use the keyword as static. Okay, सिंपली देखिए एज ऑफ नाउ लोकल वेरिएबल मतलब होगा आपका इट इज डिफाइंड इनसाइड द मेथड and it can be accessed within the same method only.
हम उसको कोई दूसरे मेथड में भी एक्सेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टेंस इंस्टेंस वेरिएबल वेरिएबल होता है डिफाइंड डिफाइंड आउटसाइड आउटसाइड मेथड। मेथड। ओके ओके, और 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 उसको और हम उसको हम विद विद इन इन क्लास क्लास ही ही डिफाइन डिफाइन करेंगे। करेंगे। आउटसाइड मेथड मतलब कहाँ पे करेंगे? तो तो क्लास क्लास के अंदर, जहाँ पे कोई मेथड मेथड स्टार्ट नहीं हुई है। और और अगर मैं उसको स्टैटिक वेरिएबल बोल रहा हूँ किसी भी वेरिएबल को, तो वहां पे कीवर्ड यूज क्या होना चाहिए? स्टैटिक। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है इन दिस? Sir, हाँ बोलिए। static access outside the method other नहीं, rather ये तो than क्लास रूल पे डिफाइन होगा, मतलब ये कोई मेथड का पार्ट नहीं है, और कोई मेथड में भी डिफाइन करोगे तो भी कोई इशू नहीं है। बट आई विल शो यू कि एग्जैक्टली ये स्टैटिक कीवर्ड से यूज कहाँ पे होता है। ओके, okay. डोंट गेट। चलो, नाउ इन टर्म्स ऑफ दिस कोड वी विल सी। ओके, नाउ आई एम जस्ट डिलीटिंग दिस। So as soon as you will create a class, you will see this type of window, right? Yes or no? Yes. Okay. Then we know in class if we want to start the execution, which method we should use? Main methods. So we are defining the main method. It is a standard syntax. Okay. Yes, syntax standard है public static void, name of the method is main. Okay, it is accepting the argument as a string, s capital चाहिए उसमें, string args array square symbol, sorry. String args array, this is the method syntax, and we have to specify the opening curly braces to define its body. main method की जो body होगी वो इस braces में define होगी। okay, so this is what our main method. Now we have seen the local variable. So what is the local variable? It is defined inside method, Inside method. and we can access that inside the same method only. Okay, so we are going to define one method. Okay, one method, that is user defined method, right? हम उसको बना रहे हैं। So public void any method name you want to give. For example, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ उसको m1, एक method है मेरी, specifying the opening curly braces, not curly, round bracket, to define method. After that I'm giving the body. अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? एक डिफाइन करूंगा कोई भी वेरिएबल. आई एम जस्ट गोइंग टू डिफाइन एनी वेरिएबल. Here, for example, I am specifying the data type as a int, variable name as a is equal to any value as a 10. मान लीजिए मैं कोई वैल्यू दे रहा हूँ. Now I have defined this inside a method. तो मैं इसको as of now उसको बोलता हूँ local variable. Right? Can I say it as a local variable? Yes or no? Yes, sir. Okay, no worries. Now again I'm just writing some piece of code, that is syso control space, in bracket I'm saying m1 method executed. Okay, m1 method executed. I have defined one method m1. In that I have defined one variable a. Okay, it's equal to 10, and I have given some sentence. Okay, now I am coming into the main method. अब मुझे कुछ execute करना है. Okay, so I'm just trying to type that value which I have defined. That was simply a, right? Variable a मुझे print करना है, but I am getting an error. यहाँ पे syntactically कुछ गलत नहीं है.
but I'm getting an error. Any guesses what is the error? उसको कॉल करना पड़ेगा सर। किसको? M1 को। M1 को. See, because of that only you cannot access any variable from the specific method. जब मैंने किसी मेथड में उसको वेरीफाई ये किया डिक्लेयर, तो मैं उसे किसी और मेथड में, मेन भी एक मेथड है, we cannot use in the other method. So that's why it is comes as a local variable. अब मुझे उसको कुछ यूज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस मेथड को ही कॉल करना पड़ेगा, राइट? करेक्ट. So how to call a method which is non-static, user-defined, You have to create object of we have that. to create an object, right? We have to create object. What is the syntax to create object? Class name. What is the class name here? D T Where? reference values. yeah, capital D T capital VAR. ये मेरा क्लास का नाम है. ओके, एज इट इज. एनीथिंग, एनी वेरिएबल यू वांट टू पुट एज ऑब्जेक्ट, मैं यूज कर रहा हूँ m is equal to keyword as a new, again same class name dt var and opening closing bracket. I have created an object of the class with reference variable as m. Now m dot, अब उस ऑब्जेक्ट किसी भी मैं मेथड को कॉल कर सकता हूँ. यहाँ पे बहुत सारे मेथड है. सम्स आर लाइक डिफाइंड बाय द लैंग्वेज, जैसे क्लोन, इक्वल्स, फाइनलाइज. ये क्या है? लैंग्वेज से डिफाइन है, बट मैंने कुछ डिफाइन किया मेथड, वो है m1. यू कैन सी हियर m1, that is from the dtvar, the class name. So I'm just double clicking on this, or you can type also manually. Now this time if I will execute, there is no error. You can see there is no error, right? Can you see any error in this? Okay. No, sir. Now if I will execute, what will be the output? What will be the M1 output? method is created. m1 मेथड में जो भी है वो एग्जीक्यूट होगा. सी, m1 मेथड एग्जीक्यूटेड. बस यही प्रिंट किया था ना मैंने. ओके. नाउ अगेन if we want to write anything in this method again, for example syso, I am going to print the value of a जो मैंने डिफाइन किया था, राइट? स्टिल मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, मैं इसको यही यूज कर रहा हूँ, बट अगेन आई एम कॉलिंग इन द मेन मेथड. सो अब मुझे क्या होगा प्रिंटेड? कंसोल में क्या आना चाहिए? फर्स्ट लाइन में होगा m1 एग्जीक्यूटेड, सेकंड लाइन में होगा वैल्यू ऑफ A a equal to 10. नॉट a इक्वल टू 10. डायरेक्टली वो क्या करेगा? a को भी 10 मान लेगा. सो वी आर गेटिंग दिस. सो दिस इज योर लोकल वेरिएबल. इसमें किसी को डाउट है? Any doubt for the local variable? Mm, Yes. मैं आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ. Any doubt? No, sir. Okay. This is your local variable. Okay, as per definition, it is defined inside a method. मैंने देखो उसको m1 मेथड में डिफाइन किया है. ओके, एंड यू कैन एक्सेस इन द सेम मेथड. क्योंकि देखो मैंने अगर किसी अदर मेथड में इसको जस्ट टाइप किया था a, तो मुझे एरर आता है. ओके, बट इफ आई एम क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट एंड कॉलिंग कंप्लीट m1 मेथड, तो मैं मेन मेथड में तो एग्जीक्यूशन के तौर पे उसको यूज कर पा रहा हूँ. ओके, सिंपली. Got it? Or again, if you want to get it clear, again I'm using one more method. मान लीजिए public void any method m2. Okay, I'm using any method. Now here I'm just trying to print
I'm trying to print A, it it will not accept. it It is is throwing an throwing an error. error. A cannot be resolved to a variable. देखिए मैंने डिफाइन तो किया है बट वो किसी और मेथड में किया है, राइट? Here I cannot use that variable because I have not defined in this method. मैंने वो किसी और मेथड में डिफाइन किया है और उसको एक्सेस करना चाहता हूँ किसी और मेथड में, तो वो पॉसिबल नहीं होगा. वाई? बिकॉज द वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड अ मेथड कॉल्ड एज अ लोकल वेरिएबल, और वो बस उसी उसी जैसे लाइन नंबर 8 है, उसी मेथड में आप उसको एक्सेस कर सकते हो विदाउट एनी एरर. लाइन नंबर 8 एंड लाइन नंबर 12 हैज सेम सिंटैक्स और सेम है. वो मैं क्या करना चाहता हूँ, प्रिंट ए की वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ. बट इन लाइन नंबर 8 it is not throwing an error, but in line number 12 it is throwing an error. Got it? Okay. Now the second is what? The instance variable. Instance variable means it is defined outside method and within class. अब within class मतलब देखो आपका class start हो रहा है यहाँ से. This is your class body. अब उसमें नंबर ऑफ मेथड है, दैट इज डिफरेंट पार्ट, बट दिस इज योर क्लास बॉडी. तो मैं किसी भी मेथड में उसको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ. नॉट इन M1, नॉट इन M2, नॉट इन मेन मेथड. आई एम गोइंग टू डिफाइन इट इन दी क्लास. ओके, आउटसाइड एनी मेथड बट इन द क्लास. आप क्लास के बाहर कर रहे हो मतलब इन लाइन नंबर 2 विच इज नॉट अलाउड अगेन, राइट? हियर आई एम गोइंग टू create one more variable like int any variable name b is equal to मान लीजिए 20. I will not get any error because now this time this variable is called as a instance variable. This time it is called as a instance variable. Why? Because it is outside any method, okay, and within the class, within the class. Now can I access this variable in any method? For example, M2 method. If I want to access here the value of b, is it throwing any error? मुझे एरर आ रहा है कोई? No. No, sir. Why? Why? Because it is an instance variable. It's not a local variable. It can Good. be used in any method. Good. Now, if I will execute this code, what is the expected output? Whatever M2 method execute and Empty method executed and B 20. whatever 20. in the M2 method. Okay, whatever in the M2 method, it will be get printed in this console, right? Right, right. Yes. Okay, so how many lines you are expecting in the output? कितने लाइन प्रिंट होंगे? 4 lines. Cool. Sure? 2 lines, sir. 2 lines. M1 only execute. Simply, right? We have Only not 2 lines, sir. called M2 method. तो M2 method क्यों print होगी? Though it's syntactically correct. Now, if I want to print that, I will call that method M dot. I will see the M2 method also. See, I'm getting M2 also. Now this time, if you will print, you will get it as 4 lines. M1 method executed, then 10 because we have printed value of A. Then M2 method we have called, that is M2 method executed its value. Again we have printed B. Got it? This is your instance variable that we have defined outside the method but inside the class, and we can access it into any method without any error. Okay? Got it? Yeah, it's also called as a global variable. There are multiple names, but don't get worried. It's also called as a global variable also. So, third type is what? Our static or class variable.
So we have to use the static keyword for that. अब static keyword हम use करने का meaning क्या है? For example, I will show you static. Okay, this is the keyword. Okay, not the data type. And data type I am saying as a int. I am I'm specifying the specifying the variable variable as as emp emp id. id. किसी किसी employee id का employee id का ये एक ये एक variable वेरिएबल है ना, है ना, and and giving the giving the value value as as 101. Screen is not screen is not आपका visible. visible. स्क्रीन नहीं दिख now it's visible now it's आ गया visible सर. Okay, yeah, ओके या thank you. थैंक देखिए यू. देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने क्या किया, किसी किसी एक एक वेरिएबल वेरिएबल को, को, जैसे जैसे वेरिएबल वेरिएबल हम हम डिफाइन डिफाइन कैसे कैसे करते करते हैं, हैं, डेटा डेटा टाइप, टाइप, वेरिएबल वेरिएबल नेम नेम एंड एंड इट्स इट्स वैल्यू. वैल्यू. बट उसके पहले मैंने स्टैटिक कीवर्ड यूज किया. सो सो व्हाट व्हाट दिस दिस स्टैटिक स्टैटिक इंडिकेट्स इंडिकेट्स द द वैल्यू वैल्यू ऑफ ऑफ एम्प एम्प आईडी. आईडी. जनरली जैसे हमने किसी एम्प्लॉय का कुछ आईडी बनाया तो वो चेंज होता है क्या, इज इट इज इट चेंजिंग चेंजिंग कंटिन्यूअसली? continuously? no नो राइट. No, right? जनरली Generally, जनरली इट विल generally बी द it will be the सेम और same or अनचेंज्ड. unchanged. फॉर दैट For टाइप ऑफ that type of वेरिएबल वी आर variable, we यूजिंग are द using कीवर्ड the एज अ keyword as a स्टैटिक. static. ओके, Okay. नाउ यू हैव Now टू you have to गेस इन guess एक्चुअल in actual प्रैक्टिस ऐसे practice कौन ऐसे से कौन वैल्यू से है वैल्यू जो है जो कांस्टेंट रहते कांस्टेंट हैं. रहते हैं. फॉर फॉर एग्जांपल एग्जांपल लाइक यूजर नेम. यूजर नेम. आपका यूजर नेम आपका यूजर कांस्टेंट नेम होता है कांस्टेंट होता है ना, वंस इट इज yes sir वंस इट इज क्रिएटेड. क्रिएटेड. बट बट यूजर नेम यूजर आप नेम इंट में आप सेव इंट में करोगे सेव कौन से करोगे, डेटा कौन से टाइप में डेटा सेव टाइप में करोगे? सेव करोगे. कैन यू टेल मी? कैन यू टेल मी. इफ यू वांट टू If you want to in store the string user, string. it, या इट विल yeah, String. it will be string. फॉर फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मोबाइल कुछ नंबर है, मोबाइल नंबर है, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय मोबाइल का नंबर, मोबाइल नंबर एम्प्लॉय है, मोबाइल एम्प्लॉय नंबर. मोबाइल नंबर. इफ यू वांट टू If सेव you वी want कैन to save, सेव you इन can save in इंटीजर. integer. ओके, सो Okay, दिस so this इंट और int स्ट्रिंग or इज string शोइंग it's डेटा showing टाइप. data type. और उसके और पहले मैं उसके पहले स्टैटिक मैं कीवर्ड यूज स्टैटिक कर रहा हूँ कीवर्ड तो यूज वो कर रहा शो हूँ तो वो करता है शो कि दिस करता है कि डेटा दिस टाइप इज डेटा नॉट टाइप इज नॉट चेंजिंग. चेंजिंग. इट्स स्टैटिक इट्स समवॉट स्टैटिक स्टैटिक. समवॉट स्टैटिक. आप उसको आप कोई भी उसको कोई भी मेथड में मेथड में यूज कर यूज सकते कर हो. सकते हो. आपके जो भी आपके क्लास में जो भी जितने भी क्लास में मेथड जितने भी होंगे मेथड है आप उसको वहां पे क्या आप कर उसको सकते क्या हो, कर सकते हो, यूज कर यूज सकते कर हो. सकते हो. सो वी विल ट्राई सो वी दिस. विल ट्राई दिस. वी हैव We m1 have मेथड. m1 method. आई वांट टू I want to टाइप type emp id. emp id. So I will So I will directly directly type here type here emp id. emp id. So it is So it taking is taking directly the directly the highlighted part. highlighted part, right? जैसे मैंने जैसे emp मैंने id emp id किसी किसी वेरिएबल कहीं तो वेरिएबल कहीं यूज तो किया यूज है और किया है उसको और उसको स्पेसिफाई किया स्पेसिफाई है. किया ओके, है. ओके. इन m2 In मेथड m2 method also I also want I to want to type it. type it emp emp id. Is it getting I'm any getting error? any error? no No, I'm No, not I'm getting not any getting any error. error. Okay. Okay. If I will If try I to will try to print it, print it, if I will try to if I will print try it, to print it, सर कॉल तो किया नहीं, मैंने किया कॉल नहीं किया कॉल उसको. नहीं किया उसको. नहीं किए सर. We have called We it, have right? called it, We have right? already We have called already the m1 called and the m2 m1 and method. m2 बस मैंने method. बस m1 मैंने m2 m1 method में m2 चेंज method में किए, change किए कुछ ऐड की ऐड लाइंस, की right? lines, right? Here you can Here see. you can see. Okay. Okay. See here. See here. m1 method m1 method executed executed 10 10 101. ये 101. m1 ये method का m1 पार्ट method है. का पार्ट है. m2 method m2 method 20 20 101. Got it? Any doubt in this? Any doubt in this? Now you will Now get you any will get any confusion कि सर confusion फिर कि सर फिर इंस्टेंस इंस्टेंस वेरिएबल वेरिएबल और और ये है ये है आपका आपका स्टैटिक स्टैटिक और और क्लास क्लास वेरिएबल. इसमें वेरिएबल. इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? So सो स्क्रीन generally, विजिबल नहीं है sorry, सॉरी, screen visible स्क्रीन नहीं है. विजिबल स्क्रीन नहीं. विजिबल नहीं है Screen not visible. Okay. ओके, लेट मी चेक. Wait a minute, because of some network issue, I'm getting error. Wait a minute.
Can you hear me properly? Okay, give me a minute. Okay, just trying to reconnect. Is it visible now? Yes. Okay. Okay. So So here here we have we have added added one one line line in in line line number number 12. 12. That is That is our our static or class static or variable. class And variable. same And I have same I added have in line added number in line 18 number 18 to both to method. both मेथड. ओके, M1 के लिए M1 भी के मैंने लिए भी मैंने ऐड ऐड किया किया है है और और M2 के लिए M2 भी के लिए मैंने भी वो मैंने ऐड वो किया ऐड है. किया है. That is That is empid. emp id, And I am and I'm trying to trying to execute the execute the code. code. So this So is the this is the expected expected output. output. That is That is M1 M1 executed, executed, then then 10, 10, then then 101 101 from from method method M1. M1. Okay. Okay. Here Here from line from line number number 24 24 मैंने मैंने M1 M1 execute किया एग्जीक्यूट है किया है और line और number लाइन नंबर 25 से 25 मैंने से मैंने M2 M2 execute मेथड किया को है. भी कॉल So किया है. M1 सो और M1 M2 और में M2 जो मेथड भी में piece जो of भी code पीस होगा ऑफ वो कोड होगा execute वो होगा. एग्जीक्यूट होगा यहाँ पर. Okay. Okay, Now the now the difference difference between this between this instance इंस्टेंस variable and वेरिएबल एंड static स्टैटिक variable. वेरिएबल की Instance इंस्टेंस variable की वेरिएबल की value वैल्यू it may इट मे change. चेंज, It may it may change, change, but for but the for this static, static this this value value is it like is like used used as a one as a time one only. time only. इसको हम इसको change हम नहीं चेंज नहीं करेंगे. करेंगे. Like like later in in my my any any method I method I can can use use username. username. Okay. Okay, But but मान मान लीजिए लीजिए मैंने कि मैंने इंटीजर में इंटीजर कुछ में कुछ अमाउंट रखी अमाउंट है. रखी है, Any amount. any amount. Okay, Like like cart amount. cart amount. So it So may it may change in change in future. future, right? It may It change may in change in future. future. देखिए देखिए, हो हो सकता है कि सकता मैं है कि इसको मैं इसको अभी अभी डिक्लेयर नहीं डिक्लेयर करता नहीं हूँ करता इसको हूँ, इसको वैल्यू वैल्यू इनिशियलाइज नहीं इनिशियलाइज करता. नहीं करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल आई एम आई जस्ट एम जस्ट स्पेसिफाइंग स्पेसिफाइंग इंट बी. इंट बी. आई विल आई नॉट विल गेट नॉट एनी गेट एरर. एनी एरर. मैं बोल मैं रहा बोल हूँ रहा कि हूँ कि बी बी, ये जो वेरिएबल है ये इंटीजर इंटीजर वैल्यू वैल्यू को को स्पेसिफाई स्पेसिफाई करता करता है. बट है, मैंने बट उसकी मैंने कुछ उसकी कुछ वैल्यू वैल्यू स्पेसिफाई नहीं स्पेसिफाई की नहीं है. की है अभी. आई हैव आई हैव नॉट नॉट स्पेसिफाइड एनी स्पेसिफाइड एनी वैल्यू. वैल्यू. सो इन सो इन फ्यूचर फ्यूचर बी की बी की वैल्यू जैसे वैल्यू जैसे अमाउंट है अमाउंट तो है तो 10 हो 10 हो सकती है, सकती है, 20 हो 20 हो सकती है, सकती है, 100 हो 100 हो सकती सकती है. है, राइट. राइट? दैट दैट मीन्स आई मीन्स हैव आई हैव नॉट नॉट इनिशियलाइज इट. इनिशियलाइज मैंने इट. उसको मैंने बस उसको क्या बस क्या किया है. किया है, सॉरी, सॉरी, उसको बस मैंने उसको क्या बताया, डेटा टाइप बताया, राइट? डिक्लेयर किया डिक्लेयर है. किया है, बट उसको बट मैंने उसको मैंने इनिशियलाइज नहीं इनिशियलाइज किया है. नहीं किया है अभी. इनिशियलाइज इनिशियलाइज मतलब मतलब वैल्यू वैल्यू देना देना, और और डिक्लेरेशन मतलब डिक्लेरेशन उसको मतलब उसको डिक्लेयर करना डिक्लेयर कि वो करना कि डेटा वो टाइप क्या डेटा है. टाइप क्या है. ओके. ओके, बट बट एम्प आईडी एम्प को तो आईडी को मैं तो मैं एक बार एक बार स्पेसिफाई कर स्पेसिफाई सकता कर हूँ और सकता उसको हूँ और उसको फ्यूचर में फ्यूचर कभी में भी कभी यूज भी कर यूज सकता कर हूँ. सकता राइट. हूँ, राइट? बट बट प्रोवाइडेड इसकी प्रोवाइडेड उसकी वैल्यू वैल्यू चेंज नहीं चेंज होगी. नहीं होगी, इट्स इट्स वैल्यू इज वैल्यू नॉट इज नॉट चेंज. चेंज. ओके. ओके, नाउ नाउ you you have have to to practice practice the the same same all all variables. variables. Just one Just one addition to addition this. to this is, देखिए देखिए आउटपुट आउटपुट जब आप जब आप देखते हो, देखते हो, व्हेन यू आर when you सीइंग are द seeing the आउटपुट, output, आपको पता आपको चल रहा पता है चल कि रहा है क्या कि 10 10 दिस this इज is लोकल local वेरिएबल, variable and 20 दिस 20 इज this द is the इंस्टेंस वेरिएबल, instance variable, और और 101 101 दिस इज this क्लास is वेरिएबल. class आपको पता variable. चल आपको रहा है. पता चल रहा है? कैन यू Can गेस? you guess? Yes. हाउ यू How कैन you गेस? can guess?
सी अगर आप डायरेक्टली आउटपुट देखोगे तो ये यहाँ पे तो 6 लाइन है मान लीजिए, बट अगर आपके पास 1000 वेरिएबल है तो आप वन गो में उसको पता नहीं कर सकते हो ना कि 10 ये आपका लोकल वेरिएबल है, 101 आपका क्लास Okay, वेरिएबल है, not from console. No, no. नॉट फ्रॉम कंसोल राइट, फ्रॉम कोड Yeah. इटसेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड दैट टू डिफिकल्ट। देखिए ए यहाँ पे स्पेसिफाई हुआ है इसलिए आप उसको इजीली अंडरस्टैंड करते हो, बट व्हाट अबाउट बी? अगर ये 17 नंबर की लाइन मान लीजिए होती है, एट द एंड 999 लाइन नंबर होगा, तो आप उसको स्पेसिफाई नहीं करोगे मैंने बी कहाँ पे डिफाइन किया था इन लाइन नंबर 4। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू गिव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल in line number 11 I'm just giving a space and saying a is local variable, right? A is local variable. I'm getting an error. What is the error? डबल कोट वो स्क्रीन में आना चाहिए सर। डबल कोट में आना चाहिए। क्या डबल कोट में आना चाहिए? क्या डबल कोट में आना चाहिए? तो पूरा पूरा सेंटेंस जो है वो डबल ओके चलिए उसको हम डबल कोट। करेक्ट ये बोलो ना। बीच में प्लस लगाना पड़ेगा। Yeah. What is that plus exactly? It will attach the variable and the string. Yeah. So simply it is called as a concatenation. Okay. It is called as a concatenation. If we want to attach anything as a sentence or any variable or something, we have to concatenate. Okay. Now the system will understand this a, like in for this m1 method we will get a that is value 10 is a local variable and emp id that is 101 is a static variable. Okay, whatever the spelling we will give, same will be printed. So now if I will try to execute this code, see m1 method executed, then 101 10 is local variable. Now here between this double quote if I am giving some space, so it will be like looks good. Okay, again I am trying to run this. See now the 10 and is what is like attached, right? You don't have any space between this, so I have given the space in double quote. It will reflect the same in your code. See 10 is local variable. अब मुझे पता चल रहा है कंसोल से from 101 in console it is called as a static variable. Similarly you can print for the m2 method. m2 method के लिए भी जो वैल्यू है, अब यहाँ पे मैंने दोनों के लिए सेम वैल्यू दी है, that's why if I'm going to define any other value for this you will get the 70. Okay, अब यहाँ पे confuse हो रहा है ना, so I have changed the value and I'm trying to run this. Now in m2 method we have used b instance variable, its value is 70. Similarly आपको यहाँ पे लिखना है m2 method में let is b is instance variable and 101 is again static variable. Okay, like this we have to create some multiple method, some multiple types of variable, that may be instance variable, static variable and absolutely the local variable also in each method. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No. Now just in addition I'm giving one more method here. मुझे एक method add करनी है, that is public. Now this time I'm making as a static method. अब मैं static method यूज कर रहा हूँ, static void m3 मेथड मान लीजिए, m3 नहीं है, ओके m3 मेथड आई एम सेइंग SYSO in double quote static method executed.
नाउ द कंसेप्ट लास्ट मेन कंसेप्ट कि अब अब मुझे मुझे इस इस मेथड को मेथड को कॉल कॉल करना करना है है m3 m3 को. को. सो सो व्हाट व्हाट आई आई कैन कैन डू, डू, इट इज इट इज स्टैटिक स्टैटिक मेथड मेथड राइट. राइट. देखिए देखिए आपकी आपकी m1 और m1 m2 और m2 स्टैटिक स्टैटिक नहीं नहीं थी, थी, नॉन नॉन स्टैटिक स्टैटिक थी. थी. दैट्स दैट्स व्हाई व्हाई वी वी हैव हैव टू टू क्रिएट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एंड देन देन वी वी हैव हैव टू टू कॉल. कॉल. बट But फॉर for द this स्टैटिक static मेथड method, we we can can directly directly call call it it by the by the class name class itself. name itself. What is the What is class the name class here? name here? Class name Class क्या है name यहाँ क्या है पर? यहाँ पर? T2 D D, small t. DT variable. Yeah, yeah, dt var. dt var. Okay. Okay. Dot. Dot. देखिए देखिए मेथड मुझे मेथड दिख रही मुझे है यहाँ दिख रही है पर. यहाँ पर. M3 ऑल दीज आर static स्टैटिक method. मेथड, उसमें उसमें से से m3 m3 मुझे मुझे लेना लेना है. है. Okay. ओके. Remaining threes रिमेनिंग are थ्रीज आर the दी language लैंग्वेज method. मेथड. वो मुझे अभी वो नहीं मुझे देखना अभी है. नहीं बस देखना है, यूजर बस डिफाइंड यूजर मेथड है डिफाइंड मेथड है m3. m3. सो मैंने m3 सो मैंने यूज m3 किया. यूज किया. ओके. अब ओके. m3 अब मेथड में m3 क्या है? मेथड में क्या है? लाइन स्टैटिक मेथड इज स्टैटिक मेथड इज एग्जीक्यूटेड. एग्जीक्यूटेड. आई मीन I कंसोल mean वी शुड console गेट we द should सेम. get the same. See at the bottom we are getting static method executed. Got it? Got it? So yes So as I as told I you in told this you in this कि कि आपके पास दो आपके पास मेथड दो मेथड है ना. है ना. आपके पास है आपके यूजर पास है डिफाइंड यूजर और डिफाइंड लैंग्वेज और डिफाइंड. लैंग्वेज उसमें भी डिफाइंड. आपके उसमें पास भी आपके स्टैटिक पास है और स्टैटिक नॉन है और स्टैटिक नॉन है. स्टैटिक है. तो मैंने कहा कि कि स्टैटिक स्टैटिक को को क्या है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, नो नीड टू ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स वी आर डायरेक्टली कॉलिंग इट बाय क्लास नेम. और अगर मैं नॉन स्टैटिक बोलता हूँ तो डेफिनेटली आई एम यूजिंग ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट डॉट क्लास सॉरी मेथड नेम, जो कि नॉन स्टैटिक है, वो वहां पे कॉल होगी. अब लैंग्वेज वाली जो डिफाइंड मेथड है वो हम आगे और देखेंगे. ओके. वी आर गेटिंग मोर लैंग्वेज डिफाइंड. फॉर एग्जांपल वी हैव सीन वन नॉन स्टैटिक लैंग्वेज डिफाइंड मेथड. कौन सी मेथड देखी मैंने, बता सकता है कोई? वी हैव सीन वन नॉन स्टैटिक लैंग्वेज डिफाइंड मेथड और उसको हमने ऑब्जेक्ट से कॉल भी किया है. विच मेथड? Static. नहीं, इस प्रोग्राम में वो मेथड है जो लैंग्वेज से डिफाइंड है और नॉन स्टैटिक है. विच मेथड? println, प्रिंट एलन राइट. मैंने कल बताया था आपको, सिस्टम उसका यूटिलिटी क्लास है, आउट उसका ऑब्जेक्ट है और प्रिंट एलन उसकी मेथड है. प्रिंट एलन उसकी क्या है? मेथड है. मेथड. देखिए ना मेथड का सिंटैक्स क्या है? मेथड नेम इनसाइड दी राउंड ब्रैकेट और उसके बाद आप उसकी बॉडी दे रहे हो. वी आर डिफाइनिंग द बॉडी. बट यहाँ पे वो मेथड सिस्टम सी लैंग्वेज से जनरेटेड है, इसलिए हम उसको करली ब्रेसेस नहीं दे रहे. उसको राउंड ब्रैकेट में हम उसको जो भी प्रिंट करना है, बिकॉज हमको पता है कि प्रिंट करना होता है, तो उसको बॉडी नहीं होगी. यू कैन गिव द मल्टीपल लाइन्स. ओके. वी कैन प्रिंट द मल्टीपल लाइन्स बाय यूजिंग दिस मेथड प्रिंट एलन मेथड. ये एक मेथड है जो सिस्टम यूटिलिटी क्लास में, देखो यहाँ पे उसका क्लास का नाम भी आता है. ओके. द सिस्टम क्लास कंटेन सेवरल यूजफुल क्लास फील्ड एंड मेथड्स. आउट उसका एक ऑब्जेक्ट है. ओके. आउट क्या है? उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. ऑब्जेक्ट डॉट दिस मेथड, है ना. तो और हम देखेंगे आगे. डोंट गेट वरीड कि नॉन ये जो सिस्टम डिफाइंड मेथड है वो मुझे समझ नहीं आया. इन फ्यूचर वी आर गेटिंग मेनी मेथड्स. ओके. सो डोंट गेट वरीड. एज ऑफ नाउ वी हैव सीन यूजर डिफाइंड मेथड. एक है नॉन स्टैटिक, दिस इज योर नॉन स्टैटिक m2 एंड आपकी स्टैटिक है m3. उनको कॉल करने का भी डिफरेंस है. अगर आप मेन मेथड में इनको कॉल कर रहे हो तो नॉन स्टैटिक होगा तो वी हैव टू यूज द ऑब्जेक्ट, और अगर स्टैटिक होगा तो डायरेक्टली क्लास नेम एज इट इज. इसमें कोई गलती नहीं चाहिए. वी अगर स्मॉल होगा तो इट विल नॉट आइडेंटिफाई. एज इट इज क्लास नेम डॉट m3. जो भी आपको मेथड कॉल करनी है स्टैटिक होगी. जो जैसे यहाँ पे मल्टीपल स्टैटिक मेथड होंगे तो आप वो सभी को कॉल कर सकते हो. सो एनी डाउट इन दिस? कोई डाउट है इसमें? No, sir. सो यू कैन मेक अ प्रैक्टिस. ओके. और आप भी डेडिकेटेडली एक फोल्डर बनाइए. फोल्डर मतलब यहाँ पे एक बनाइए आपका प्रैक्टिस. फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस माय जावा प्रैक्टिस, और उसमें प्रोजेक्ट में पैकेज बनाइए, एनी एनी पैकेज नेम, और उसमें वन बाय वन विथ डेट आप ये सब आपका जो बैच का वर्क है ना वो सेव कीजिए. जैसे फर्स्ट आपका कोड था, है ना.
फर्स्ट जावा कोड, उसके बाद डेटा वेरिएबल, ये इतने आपको क्लास होनी चाहिए, जितना आप होमवर्क कर रहे हो उतने क्लास बनाइए आप, और उसमें डेली ये टाइप कीजिए। ओके, नाउ मैंने क्या किया था, इसको कॉपी कर दिया था और आपको वर्ड में दिया था। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड टाइप बाय योर ओन। अगर आप देख के लिखोगे तो आप एज इट इज कॉपी कर रहे हो, ये मीनिंग बनता है उसका। सो यू कैन नॉट गेट जो डिफरेंट एरर आते हैं ना हमको, कि सिंटैक्स में कुछ एरर होगा, या आपने डिफाइन नहीं किया होगा, या स्पेलिंग मिस्टेक होगी, है ना, या एस कैपिटल नहीं है सिस्टम का, तो ये सब एरर आपको आएंगे जब आप खुद टाइप करोगे तो। और अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो उसका कुछ मीनिंग नहीं है। ओके, मेक श्योर। सो एनी डाउट टिल दिस?